As I mentioned in my speech, yes, for the first quarter this year, our projection was, Reserve Bank's projection was 7.1%. But actual number which has been given by the first advance estimates given by the National Statistical Office is 6.7%. Now, obviously, 6.7%, would give an impression that, it is lower than 7.1, goes without saying. But if you look at the components of the GDP, the main drivers of the GDP growth, whether it is consumption or it is investment, or from the supply side it is manufacturing, services growth, construction sector growth, I think all the sectors, the growth is 7% plus in the first quarter. Two aspects which have slightly pulled it down. One is government expenditure, which is both central government and state government expenditure, perhaps due to the election season between April and June and the operation of the model code of conduct of the election commission. Government expenditure was lower in the first quarter, and when I say government expenditure, it is both central and state government expenditures. But going forward, we would expect the government expenditures, that is both state and central government expenditures, to pick up and provide the required support to growth. The other thing which was slightly lower was agriculture, which grew, I think, at about 2% or so. But first quarter, it's the second quarter really. Second quarter onwards, from July onwards, the monsoon has been very good. And now it has spread almost to all areas of the country, excepting, say, a few areas. So monsoon is good, looking good, and the agriculture crop sowing is looking very optimistic and, looking very positive. So under these circumstances, I would feel that although the first quarter growth has come at 6.7%, but I think we have reasonably confident expectations that the year, the annual growth which we have projected at 7.2% should materialize in the current year. Sir, how do you see Rate cut I will not be able to say, because that's a that the monetary policy committee will decide. Please, monetary policy committee decide. Upon Odia channel na English channel? Odia. So seta monetary policy committee amaro rate cut habo ki rate seiti rahibo ki rate badha habo सेटा सेटा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करिवो सेते मु गोटे आगरु कहबा उचित नुहे किंतु मु जेमती गला मॉनिटरी पॉलिसी रे कहितली जे वर्तमान हमर इन्फ्लेशन हमकु 4% रे पहुंचबाकू आउरी डिस्टेंस अछि कवर करबाकू जुलाई रो इन्फ्लेशन 3.5% आसीची सेटा मेनली स्टैटिस्टिकल रीजन जोगु काइना गला वर्ष जुलाई रो इन्फ्लेशन बेसिस तार से जो बेस इफेक्ट काउंट कले सो इटा 3.5 आछि हमको देखिया को पड़िबो इन्फ्लेशन 4% रे पहुंचवा दरकार आ सेठी किछ समय रहिबा दरकार आ नहले आपण गोटे वन ऑफ मेजर भाव में थरे इंटरेस्ट बढ़े दउथिबे कमे दउथिबे देखला पुणी इन्फ्लेशन अधिक आस्तिबो सो सेति में कि वन ऑफ नंबर बेसिस रे डिसीजन निया जायनी किंतु मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करिवो आमर पॉलिसी हला हमें प्राइस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करिवो 4% आखा पाखे इन्फ्लेशन रखिबो और 4% आखपाखे इन्फ्लेशन जदि रहिबो 4% आखपाखे जदि इन्फ्लेशन रहिबो ताले सेटा देशर प्रगति पे कि बहुत भल आ गोटे क्वेश्चन नहीं सेटा गवर्नमेंट स्कीम से विषय रे मोर किछ कहबार नहीं सेटा देखंतु गवर्नमेंट स्कीम नहीं गवर्नमेंट स्कीम ऊपर मु कोनोसी कमेंट देबा को चाहूनी आप आरबीआई रिलेटेड मैटर पचारु मु कहबी देखो डिपोजिट बढ़िया न्यू स्कीम आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शुणु डिपोजिट रेट है केते इंटरेस्ट रेट दिया हबो केते सुध दिया हबो डिपोजिट रे कि केते सुध दिया हबो लोन ऊपर केते इंटरेस्ट रेट रहिबो सेटा बैंक को सेटा आरबीआई डीरेगुलेट कर देछि बैंक रो सेटा कमर्शियल डिसीजन हबो बैंक माने एटा तांकर निजर से माने निजे डिसाइड करिवे तांकर मैनेजमेंट डिसाइड करिवो मु गला मॉनिटरी पॉलिसी रे कहितली जे बैंक मानु को हमें अपील करछु जे डिपॉजिट ग्रोथ बढ़िया दरकार आ प्रत्येक बैंक तांकर जो ब्रांच नेटवर्क अछि सारा देश सारा से ब्रांच नेटवर्क को ताकू यूटिलाइज करी आउ नुआ टाइप रो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बढ़ेगा पे सो वर्तमान से कि एक्शन जोटा जो पदक्षेप निया सेटा बैंक मान ऊपर निर्भर करुच्ची आमे आशा ही बैंक माने निश्चय करेंगे।